Hello everyone, welcome to Lex Simplified. So today's topic for discussion is qualification and disqualification of members of parliament. Before discussing this topic in detail, let us see which are the organs of the Parliament of India. So the three organs of Parliament of India, the first being the President, who has various powers and functions, which could be of various nature like legislative, executive, or judicial. The second being Rajya Sabha and the third being Lok Sabha. The president, when it comes to both the houses, have many powers and functions, out of which the first being that he can call joint session of both the houses. Second, he can dissolve the Lok Sabha. And the third being that whenever a bill becomes law, his assent is essential. Moving on, when we talk about Rajya Sabha is a permanent house which is not subject to dissolution. And the members are elected for a period of 6 years, and every 2 years, 1/3 of its member gets retired. The total number of members in Rajya Sabha, that is the maximum number of members, is equal to 250. अब 250 में से 238 representatives होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा अलग अलग फील्ड से, from arts, commerce, science, literature, the people who have practical knowledge, so that all the fields can be represented in the house. The question being कि when it comes to representative of states and union territories, how is the decision made? So the election is done by the legislative assemblies in accordance to the system of proportional representation by means of single transferable vote. Now, when it comes to Lok Sabha, the maximum number of members is 550. Now, from 550 up to 530 can be elected by votes in states. And the election is done by adult franchisee, whereby adult people vote and nominate or elect their candidate. The next being that if 530 are already elected by the people, the next 20, okay, up to 20, the members will be elected for the union territories. Now, it is possible that president is of the opinion कि हम लोगों ने nominate कर लिए, elections कर लिए, but Anglo-Indian communities are not adequately represented. In that case, under Article 331, the President of India can nominate 2 members from the Anglo-Indian community in case he feels that the representation is not adequate. I hope आपको यहाँ तक समझ आया है. In case if you're jotting down any of the points written on the slides, feel free to pause it and then you can continue again. Now, when we talk about qualifications, ठीक है, तो हमने जान लिया कि भाई 3 ऑर्गन्स रहते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं. पर मैं किन लोगों में से इलेक्ट करूंगी? मेरे पास एक बेसिक इलेक्शन के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा, राइट? तो अब जो मेरा आर्टिकल 84 है वो बताता है कि अगर अ पर्सन, ओके, इफ अ पर्सन is eligible, then he is eligible to get nominated or elected. Okay. But first of all, he has to fulfill all the criteria that are mentioned here. So the first being, let us quickly read. So this is the article as is I have put for all of you. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in parliament unless, ओके, अनलेस मतलब मैं एक पर्सन को वो क्वालिफाई नहीं होगा उस सीट के लिए अनलेस वो ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करे. तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो भारतीय नागरिक, दैट इज इंडियन सिटीजन होना चाहिए, राइट? और वो मेक्स एंड सब्सक्राइब्स बिफोर सम पर्सन ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ बाय इलेक्शन कमीशन एंड ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट for the purpose in the 3rd schedule. तो जब आप 3rd schedule देखेंगे वो ओथ का एक
ड्राफ्ट है और बताता है कि आपको ओथ या अफर्मेशन कैसे लिया जाए। तो यहाँ पर द फर्स्ट क्राइटेरिया भी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने जैसे बताया है वैसे ओथ या अफर्मेशन जैसा पर्पस है, जैसे थर्ड शेड्यूल में सेट आउट है, वैसे उसने लिया होना चाहिए। द सेकंड बीइंग दैट इन द केस where the seat is in the Council of States. Now the question being, what is Council of States? Rajya Sabha or Lok Sabha? You can go back and see in case if you do not remember. So Council of States is Rajya Sabha. तो अगर आप देखेंगे तो बोलता है कि अगर जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात है तो नॉट लेस देन 30 years, बट अगर हाउस ऑफ पीपल के बारे में बात है देन द एज लिमिट इज नॉट लेस देन 25. तो अगर मैं इसको अलग तरीके से समझना चाहूं तो अगर मैं किसी भी मेंबर को देखूं तो क्वालिफाई करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए होगा 30 एंड अबव. ओके, 30 years एंड अबव. और हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के लिए क्या होगा, 25 एंड अबव. ठीक है, और इसके बाद तो एक हो गया सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड ओथ एज पर थर्ड शेड्यूल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय इलेक्शन कमीशन. द नेक्स्ट बीइंग इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स 30 years and above, in case of house of people 25 years and above, and the third being that he possesses such other qualification as may be prescribed in that behalf or under any law by the made by the parliament. Easy. अब ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात कि मैं भाई अगर ये क्राइटेरियाज फुलफिल करती हूँ तो मैं क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हूं, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी, मैं कर जाऊंगी. ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन एक्ट which are discouraged, okay, by the parliament to maintain the decorum and standards of the members of parliament. Now, as your article 84 gave you the qualifications, your article 102 gives you the disqualification. Now, if you see the this is the article as is. Okay, the purpose behind me putting the article as is to make you understand how to read the article. You really have to break the article down to understand it properly, and then it's easier to understand in comparison to reading it out without punctuation marks. So now let us see what are the disqualification points. Okay, a person, so this is clause 1 subclause 8. Okay, this is how you're going to read it. A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament. अब इस लाइन से पहले मैं ये समझना चाहूंगी या मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब मैं बोलती हूँ qualifications and disqualification of members of parliament, from this line you can understand and otherwise also that the qualification and disqualification applies to both the members of parliament of Lok Sabha and the members of parliament of Rajya Sabha. Okay, from examination point of view, in case if you are being asked कि लोक सभा के members के qualification या disqualifications बताइए, your answer does not change. ठीक है, now here, so the subclause 1 being, if he holds any office of profit under the government of India or government of any state other than an office declared by parliament by law, not to disqualify its holder. Simple sense में कि अगर जो member of parliament है, okay, along with being the member, if he is holding some office of profit, अब आप सोचोगे मैम 2 बार बोलने से we will not understand. You will have to help me understand, help us understand what does office of profit mean. So let us read through all of it and then I will explain you the term with help of certain cases and certain tests that have been laid down. The second being, if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court. मतलब
एक अथॉरिटी ने, एक कंपीटेंट अथॉरिटी ने, स्पेसिफिकली हियर बीइंग अ कोर्ट, ने बोल दिया है that he is of unsound mind and he may not be able to take decisions properly. Okay, so he's not able to take decisions properly, informed decisions. In that case, unsound mind है. तो अगर कोई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, and of course when a court declares it, it is going to be on the basis of certain evidences, right? If he is an undischarged insolvent. The fourth being, if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state. Matlab, he no more is a citizen of India or he has voluntarily acquired the citizenship of the foreign country. ये सब के अलावा अगर कोई भी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स की वजह से द पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड, देन द पर्सन is also disqualified under this. Now, after this, what happened by the 52nd Amendment, there were changes made in your Article 102, 190, 191, and I think one more article, whereby the other grounds for disqualification was added by the 10th schedule. So 10th schedule was introduced. So if you see clause 2 here, it says that a person shall be disqualified for being a member of either house of parliament if he is so disqualified under the 10th schedule. अब ये 10th schedule क्या है, अभी हम डिस्कस करते हैं. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आइए समझ लेते हैं कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है. ठीक है, तो और इसका ये एज अ डिस्क्वालिफिकेशन रीजन क्यों मेंशन किया गया है. ठीक है, अब जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, देयर आर सर्टेन पावर्स दैट आर गिवन टू मी, देयर आर सर्टेन ड्यूटीज दैट आर गिवन टू मी. If I also hold another office, okay, some other duties that I have to discharge, there can be conflict of interest of the person individual and the positions, right? So just to make sure that the independency, the transparency is maintained, office of profit is also mentioned as one of the disqualification criteria. अब होता क्या है, ठीक है, not that the constitution defines what is office of profit, but the precedents helps us understand what it can be. Now, when I say profit, first of all, it must be received by the way of salary, remuneration, but not as a compensatory allowance. ठीक है, अगर मान लो कि मुझे 200 या 300 रुपए कोई काम करने के लिए मिल रहे हैं, it is not sufficient for me to maintain myself, right? I will still need to do some other thing to make sure that I have a consistent flow of income, like salary or some other means, right? In that case, the profit must be received. So when I say that X person holds office of profit, that profit cannot be in terms of I giving you 200 rupees because you travel from point A to point B, right? But if it is in the terms of salary, every month 10,000 rupees, every month 15,000 rupees. In that case, I have a consistent flow of income, so the profit must be received in that manner. Now, there are various interpretations and case laws around it. Couple of case laws that I could get for you are here. So first being Abdul Sakar versus Rishal Chandra. ठीक है, AIR 1958 SC 52 or SC 52. Now here if you see, this is a 5-pointer test which is laid down कि भाई मुझे पता कैसे चलेगा कि
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, एंड दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। तो अब समझना ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन सा होगा। तो ये सारे प्रश्न अगर आप पूछे और आंसर अगर पॉजिटिव में आए, देन इट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो वेदर द गवर्नमेंट हैज पावर टू अपॉइंट, क्या जो भी वो पोजीशन है वहां पर गवर्नमेंट हायर करती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, या कोई प्राइवेट अथॉरिटी अपॉइंट करती है। साथ ही साथ वेदर द गवर्नमेंट हैज राइट टू रिमूव और डिसमिस द होल्डर ऑफ द ऑफिस, अगर वो अपॉइंट हो चुका है तो क्या किसी प्राइवेट अथॉरिटी के पास पावर्स है उन्हें रिमूव करने के लिए, या गवर्नमेंट के पास पावर है। वेदर द गवर्नमेंट पेज द रेम्यूनरेशन, क्या गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, क्या फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या गवर्नमेंट के लिए हैं, या वो नेचर के हैं, राइट। Whether the government exercises control over the performance of those functions or not, right? So these are couple of points that you will consider. Now, when we talk about another case law, it is mentioned here, which says Jaya Bachchan versus Union of India. I highly recommend you to read this case. I will try to link the judgment link in the pinned comment section. So try to see if you can. Otherwise, you can search on your own. तो इसमें क्या हुआ कि जया बच्चन जो राज्यसभा की मेंबर थी, उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन ऑफ फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल। अब एक होता है कि पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, जहां पर पार्लियामेंट एक्चुअली एग्जम्प्ट कर सकता है लोगों को कि भाई नहीं, ये पर्सन ही इज नॉट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू अस, एंड इफ ही इज होल्डिंग इट इज ओके, ही कैन स्टिल कंटिन्यू बीइंग मेंबर ऑफ द ईदर ऑफ द हाउसेस। बट यहाँ पर उनको एग्जम्प्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो जया बच्चन ने केस रेज किया कि भाई देयर वाज अराउंड लाइक 5,000 प्लस सम 10,000, तो अराउंड 15-20,000 कुछ उनको मिलने वाले थे। तो शी सेड, बट आई हैव नॉट टेकन एनी अमाउंट, राइट, I have not received anything. Then why the exemption is not given to me? And the court took the stand कि सबसे पहले तो ऑनरेरियम है या कुछ और नाम है, if you are able to make the profit, or if even it has the potential to make the profit, it is office of profit, right? Me giving it some other name of honorarium या कुछ compensatory allowance doesn't change the outcome. And you being entitled to it itself means that you are holding office of profit. It doesn't matter that whether you have taken it or not. Okay? So that being the entire case, interesting one. Do read it in case if you find time. Now, तो यहाँ पर है disqualification on the ground of defection, that is under schedule 10. अब क्या हो सकता है, तो कि भाई वो वॉलेंटरीली अपना मेंबरशिप दे दे। ठीक है, वॉलेंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप। नेक्स्ट बीइंग कि या तो वो वोट करता है या तो वोट नहीं करता है। ठीक है, वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस अगेंस्ट एनी डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और बाय एनी पर्सन और अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय इट्स इन दिस बिहाफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब अगर मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाना चाहूँ कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टैंड है उससे अलग जाकर, बिना उनको बताया, बिना उनकी अथॉरिटी ने इनको बताए हुए, वो या तो वोट करता है या तो नहीं करता। और 15 दिन के अंदर अगर पार्टी नहीं बोलती कि नहीं चलो उसने जो भी किया वो ठीक है, देन इन दैट केस ही गेट्स डिस्क्वालिफाइड, तो कंडोन करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि if any nominated member joins any other political party after expiry of 6 months from the date on which he takes his seat in the house. ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब हर एक चीज के एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, हियर सबसे पहला कि मान लो कि अगर मेंबर ने रिजाइन कर दिया या बैकआउट कर दिया क्योंकि
दो पार्टीज मर्ज हो रही है, और वो मर्ज कब होंगी? जब 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी दे अग्री। ठीक है, अब मर्ज हो रही है, आई मे नॉट बी ओके विद द आइडियोलॉजी, आई बीइंग द मेंबर आई मे नॉट बी ओके विद द आइडियोलॉजी, एंड आई मे नॉट wish to continue with the entire merged party. In that case, I may want to resign or back out, because when I was nominated as of the party X. Now X and Y are coming together. I do not or may not want to represent that party. In that scenario, I as a member might want to back out. ठीक है, या resign. Then it does not attract any disqualification. The next being, if after being elected as a presiding officer, ठीक है, अगर मान लो मैं मेंबर हूं, मुझे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है और मैं अपनी मेंबरशिप से रिजाइन कर रही हूं, क्यों? ताकि मैं अपना जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाला रोल है वो अच्छे से कर पाऊं. इन दैट केस इट डज नॉट कॉल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. एंड द थर्ड बीइंग कि या जो ये पार्टी नई पार्टी बन गई है, या तो मैं उसे रिजॉइन नहीं करती, या मैं किसी अदर पार्टी की मेंबर बन जाती हूँ. इन दैट केस इट विल नॉट कॉल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. सो I hope you all had a clear understanding of the topic. In case if you have any difficulties, feel free to put it in the comment section and I'll be very happy to help you out. Thank you so much. Bye-bye.